हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 70 रिटन नॉट इन हाई स्कूल ग्रामर बुक से। और ये जो टॉपिक है ये है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन। यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस कंटेनिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहला है एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी जो कुष्ठ रोग होता है, जिसे अगर आप ऐसे देखें कोई भी छूत की बीमारी, कोढ़ जिसे कहते हैं, उससे एक तो यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी, इसको हम सेंटेंस बना सकते हैं ही फील पैथी फॉर पीपल एफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी। हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है सैंग्विन ऑफ सक्सेस। सैंग्विन मतलब होता है होपफुल, तो ही वाज सैंग्विन ऑफ सक्सेस बट कुड नॉट सक्सीड, मतलब उसको उम्मीद थी अपने सक्सेस की पर वो सफल नहीं हो पाया। कमिट टू मेमोरी, याद रखने वाली चीज। These lines are so good that you should commit them to memory. Specific for malaria. Chloroquine is specific for malaria. Specific means खास तौर। Allows for short weight. You should make allowance for short weight. Appropriate to the occasion. Her dress was not appropriate to the occasion. Abstain from animal food. Abstain मतलब अपने को दूर रखना. He decided to abstain from animal food. Antipathy to dogs. I feel an antipathy to dogs. Convulsed with laughter. भर जाना, जैसे कहते खुशी से, हंसी से भर जाना. Whenever he speaks, audience convulsed with laughter. Contrary to expectation, I have got a first class. That was contrary to my expectation. Infested with vermin. Some animals are infested with vermin. Touched with pity. When he saw that old woman, he was touched with pity. Subversive of discipline. His speech to the students is subversive of discipline. Beneficial to health. Exercise and healthy life is beneficial to health. Tantamount to refusal. His reply was tantamount to refusal. Worthy of praise. Soldiers' service to the country is worthy of praise. Beset with difficulties. Columbus was beset with difficulties during his voyage. Accountable to God for all our deeds and acts. We are accountable to God. Atone for misdeeds. How can I atone for my misdeeds? Addicted to opium. People addicted to opium cannot live long. Entitled to consideration. His appeal for mercy is entitled consideration. Heedless of consequences. The crowd threw stones at the police, heedless of consequences. मतलब कि जो भीड़ थी उसने पत्थर मारे पुलिस को बिना सोचे समझे कि आगे नतीजा क्या होगा. Deaf to their entreaties. He was asked by my or by his wife and parents not to join an army, but he was deaf to their entreaties. मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आर्मी मत ज्वाइन करो, और उसने एक तरह से अपने उनकी बातों पर ध्यान ना देके बातों के कान बंद कर लिए. Aptitude for business. Many people in this city have an aptitude for business. Incentive to hard work. He doesn't have much incentive to hard work. Sensitive to criticism. A person who is sensitive to criticism cannot get on well in life.
Indifferent to praise or blame, he acts as his conscience dictates. Indifferent to praise और blame. तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जिसमें वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस. अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में. तब तक आप सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन.